but because we have a mic, we feel like हमें सब कुछ solve करना है और solve करके लोगों को बता भी देना है कि ये solve हो गया, तुम भी ऐसे ही करो. अरे अरे मेरे को 10 साल और लगेगा अपनी philosophy solve करने में यार. Who am I to tell you तुम्हें कैसे जीना है? But just because कि अब माइक आ गया तो है, लोग तो बताएंगे. we're not that evolved. Okay, there are people living in, not doing jobs. Probably they're housewives who have more understanding or who are more clear on their priorities than we are. Yeah. Have you been feeling any sort of pressure or like censorship in your mind before you say anything or even put something out on social media, or not yet? Of course, all of us are feeling it. मतलब, I would have to be like living under a box or two. मतलब वो तो I'm saying people who work in offices, जो लोग मतलब normal काम करते हैं, जो इनका काम actually बोलना नहीं है, उनको भी लगता है कि हम Facebook पे क्या post कर रहे हैं, क्या tweet कर रहे हैं. Because there have been incidents जहाँ पे someone has been trolled for tweeting something or have lost jobs. Like that is something anyone who has an opinion which is not aligned with the establishment, everyone's feeling the pressure, and of course, I think I'm also part of it. But I think at some level I have stopped getting shocked. It's just that this is I'm like कितना इसमें shock हो सकते हैं ना, यही है. और it is a choice we are making to like we can always like not do this and do something else also. तो उसमें आपको कहाँ अपने आप को प्लेस करना है, कैसे navigate करना है, ये figure out करना है. Can't get shocked now anymore. So do you hold back then in that case? Well, I'm careful, I would say. कि hold back. See, in general, where like जब मैं comedy का जो live stage मेरा चल रहा है उसमें again I think we discussed earlier also that I end up shitting more on myself than anything else in my comedy. And while that is evolving and that does wrap up like a few things about the society and our biases also, but anyways I had not reached that stage in my content writing where I'm giving a solid opinion on how people should behave or function or how government should behave. Once in a while the angst comes out, of course, कि अगर हमारे घर का एक गड्ढा है जो भर ही नहीं रहा है, so of course that will be part of the content. So that's what I'm saying. I was not at a stage only before all this started happening where I was commenting too much on how things should be. Or on stage because, at least. मतलब वही कि there is किसी भी चीज को एक होता है आप आपस में डिस्कशन करते हो, वो एंग्स्ट प्योर एंग्स्ट होती है, उसको फनी नहीं बनाना पड़ता, राइट. बट जब आप कॉमेडी कंटेंट करते हो तो देयर लेयर्स टू इट, राइट. आपकी वो ओपिनियन बहुत क्लियर होनी चाहिए और वो एंग्स्ट इतनी पुरानी और इतनी फर्मेंट हो चुकी होनी चाहिए कि उसके ऊपर आप जोक्स लिख पाओ. तो बिकॉज आई वाज ऑलरेडी नॉट डूइंग इट वेरी अग्रेसिवली. ऑफ कोर्स देयर वाज सम कंटेंट दैट आई जस्ट ड्रॉप्ड. लाइक कुछ कोई अगर एक स्टोरी थी which was not political or anything, but it was just कि कुछ some ritual related to some puja की ceremony, उसके around how there was something happened. It was not a comment on the ritual or the religion. It involved the name of a god because वो ritual was around that god, and people told me कि why, मतलब वो कर लेना 5 साल बाद अगर चीजें चेंज होती है तो. अगर जिंदा रहेंगे तो बहुत लंबी टाइम कॉमेडी करेंगे ना. Yeah, you got to look at it as a long game. हाँ, correct. And the thing is it's a very personal call कि आपको कैसे navigate करना है. जो मेरा audience है उसको कभी ये doubt नहीं आता कि मेरा opinion कौन स्पेक्ट्रम में कहाँ लाई करता होगा, right? Am I pro or anti or am I how conservative I am, और वो conservative से liberal के स्पेक्ट्रम में left से right के स्पेक्ट्रम में. I think कोई comic नहीं, at least no practicing comic is highly I don't know a broad statement, but I'm saying at least all of us in our content we don't hide it. So अगर 100 लोग देखने आ रहे हैं तो 100 लोग को पता है कि they are buying tickets for a person जो कि lies on this side of the spectrum. Okay, so there is already alignment there. अब उसमें मुझे कोई ना कि how much do I want to risk it, how much do I want to make them worry about their safety, do I want to, like होता है ना कि आप एकदम
फ्लेम अप करके बर्नआउट कर जाओ एक बारी में कि कुछ तड़ाकेदार बोल दें और उसके बाद फिर कुछ टाइम तक लोग बातें करते रहे लेकिन हम शोज ना कर पाए, ठीक है, वही हो रहा है। दैट आल्सो इज एन ऑप्शन. तो अभी तक तो मेरा naturally because it has not come to this, so I'm censoring myself, but again it's like I've just told myself that this is how it is right now, and You're being careful and you have to survive first. yeah कि this अगर ये है तो इसको like कहते नहीं out of the box in the box thinking कि अब you've been given a box, okay, and sometimes the best creativity comes when you With are thinking with limitations. कि I have to find a way to communicate what I am feeling about the country, but maybe in a way कि जो जिनके पास दिमाग है उनको ही समझ में आए. That sort of defeats the purpose, but Why does no ऐसे भी मुझे नहीं लगता कि मेरे because this is what feedback we get now always कि बहुत अच्छा किया आपने लेकिन मास्टर को समझने नहीं वाला है, जिनको समझ है उनको ऑलरेडी पता है, ये आता है ना बहुत बार. नहीं तो वो भी हमारा एलिटिज्म है, जिसको जो अपना दिमाग खोल के सुनना चाह रहा है उसको समझ में आएगा, जो सुनना ही नहीं चाह रहा उसको आप कितना ही बोल. अगर मैं जाके लिटरली अगर जिसको दिमाग खोलना ही नहीं है, इफ आई यूज द क्रासेस्ट लैंग्वेज एंड से कि XYZ इज नॉट गुड फॉर द कंट्री, हाउ इज दैट हेल्पफुल? इट हैज टू बी डन इन अ वे वेयर where it is intelligent enough to bridge the gap, not like make the gap bigger. Correct. I also been telling myself that it is also sort of a savior complex that you have to get over, that my art or my content will change people's opinion. If it does, it's a byproduct. If it doesn't, I'm doing it for myself first. That's what I keep reminding myself. Yeah. Well, I'm saying again to each his own. I again feel कि ये तो इतना ओवरवेलमिंग है. पहले अच्छे जोक्स लिखना, फिर वो जोक्स ऐसे परफॉर्म करना कि हमें अच्छे लग रहे हैं, सामने वाले को भी अच्छे लगे. उसके बाद उतना ऑडियंस इकट्ठा करना कि वो आके देखें उसको, जो आपने बहुत अच्छा 10 लोगों पर ट्राई किया हुआ है. ये सब करने के बाद उसमें आपको ये भी चाहिए कि आप ऑफ कोर्स यू वांट टू हैव एन इन्फ्लुएंस ऑन पीपल, बट अगर इन्फ्लुएंस इज द प्राइमरी गोल तो ये पहले के 3 स्टेप कहाँ से सॉल्व होंगे? इट इज अ लेयर बाय लेयर प्रोसेस ना, कि आपको कुछ बोलना है, आपका काम लोगों को हंसाना है, और अगर एजेंडा आपका ये है कि आपको लोगों का दिमाग परिवर्तित कर देना है, तो then आपका गेम अलग है. Then your comedy is a byproduct probably. It's the vehicle you chosen, but and I think it is मुझे I think यही लगता है कि I think हम सबको सेम ब्रश में क्यों पेंट कर देना है ना, कि it is 1-2 साल बाद शायद I am the person जिसको actually who's more kicked about going and changing people's opinions, and comedy becomes like something that I once in a while 2 पैराग्राफ में एक चुटकुला डाल दिया, ठीक है, I can totally be that person, and then I'm looking for something else. Right now I'm not that person. I'm a person who would want to make them laugh, and of course I have an opinion about things. But मेरे कॉमेडी का आउटकम नेसेसरली ये नहीं कि मेरा और आपका ओपिनियन सेम हो जाए शो के एंड में. मतलब मैं कौन होती हूँ? मैंने कितनी दुनिया देखी है. नहीं देखी तो काफी है ऐसे. But again, this comes from in my where I stand. I feel like कि who am I to tell someone कि आपका जो lived experience है by the way वो झूठा है. मैं 1 घंटे के लिए कुछ बकवास करके जा रही हूँ, उसके बाद आप वो सब छोड़ के मेरा ओपिनियन ले लीजिए, ठीक है. But with that level of self-awareness, does it become debilitating sometimes? मतलब I think वो phases आते और जाते हैं कि it also what I'm saying is कि it simplifies things also ना, कि अभी when I'm saying it also I'm like कि you go through this. Of course I've gone through this phase where I've thought about all of this, and of course in this country if you are a young person you can't escape that thought process कि मेरी क्या जिम्मेदारी है, देश में इतनी डिस्पैरिटी है, इतने लोग सफ़र कर रहे हैं, अगर मैं सफ़र नहीं कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो मुझे एक ऑपरेसर्स कॉम्प्लेक्स ऑलरेडी है. तो अगेन मैं जो भी लाइक आई हैव कलीग्स जो कि अगेन नौकरी कर रहे हैं अभी भी, एंड आई रिमेंबर जब लास्ट ईयर ये anti-CA NRC वगैरह प्रोटेस्ट चल रहा था, दे वर जेन्युइनली टेलिंग मी कि they sit in office and feel bad all the time कि हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं. लोग प्रोटेस्ट पे बाहर निकले हुए हैं और हम ऑफिस में कंप्यूटर बैठे हुए हैं. all of us feel things, and I think
हम सबको अपने लिए फिर एट सम पॉइंट डिफाइन करना पड़ता है कि हमें उसका करना क्या है. कि जो आदमी ऑफिस में काम करता है, जिसके ऊपर वो है कि 5 लोग की लाइबिलिटी है, जिसको पैसे कमा के घर लेके जाना है, अगर उसके लिए रास्ता ये नहीं दिख रहा है कि वो नौकरी छोड़ के एकदम सड़क पे उतर जाए, तो उसको कोई और रास्ता ढूंढना पड़ेगा अपना ये कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने के लिए. So, my point is that I had that thought process, and of course, because we are totally every day we're going and holding a mic, it feels like this is the only way to solve it. It's an opportunity, yeah. It's a rare opportunity in a country like this. But I also again वो पूरा journey करके, and of course it got far very very like very it really does block your thought process कि मुझे करना ये है पर मैं कर ये रही हूँ ये वो. But I think वो है कि वो अपने आप फिर resolve भी हो जाता है. There are phases, and maybe it's a cycle also. Maybe you come back full circle after a few years. I think everything is a cycle. No, I think that's a very like weird statement to make. Everything is a cycle, but a lot of things like have these. A lot of your thought process is this ना कि आप जब young होते हो तो आपको ऐसे लगता है कि जितनी भी we typically grow up in fairly conservative households और आपका way to express yourself or to claim an individuality is to just latch on to all the liberal concepts which contradict whatever your household has taught you, okay? Yeah. Then you grow a little more older and you start seeing merit in some of those things. Yeah. Okay, and then you're like, there's a reason why this thought process exists. Yeah. Maybe the way they execute it is wrong, but ये जो जैसा हम बहे चले जा रहे हैं वो भी सही नहीं है. So you start finding midway in that, and then slowly I think most of life is that कि आपने जो चीजें discard की थी उनमें से क्या क्या आपको वापस चुन के अपने लाइफ में रखना है, जो आपने नई चीजें अपनाई उनमें से क्या क्या discard करना है, तो लगा ही रहता है. I think that ultimately it's about power. No, you achieve any kind of power, then the decision becomes even more difficult because now do you exercise it and become part of the structures of power that lead to oppression, or you check out completely? You can't check out completely. No, like आप जाओ हिमालय में भी तो वहाँ पे केव में पड़ा है पैकेट कुरकुरे का already. You can't completely get out of it also. Correct. और वही है कि हम अपने ऊपर इतना प्रेशर डाल देना कि हमें या तो वही क्या तो आपको इतनी क्लैरिटी हो कि आप सब कुछ डिस्कार्ड करके you the thing is कि we have to understand कि we are all evolving, okay? कि हमें एक तरफ जो हमें गरीबी देख के लोगों को देख के दिल टूटता है और लगता है कि यार ये क्या स्ट्रक्चरली हम कितने फक्ड अप हैं, और दूसरी तरफ once in a while हमें भी महंगा खाना अच्छा लगता है. Yeah, we do enjoy कि there is, of course there's constant conflict, and I think it's okay to not have an answer right now. I think it's like we are people who've lived not half of our lives so far, okay? But because we have a mic, we feel like हमें सब कुछ solve करना है और solve करके लोगों को बता भी देना है कि ये solve हो गया, तुम भी ऐसे ही करो. अरे अरे मेरे को 10 साल और लगेगा अपनी फिलोसफी सॉल्व करने में यार. Who am I to tell you तुम्हें कैसे जीना है? But just because कि अब माइक आ गया तो है, लोग को तो बताएंगे. we're not that evolved. Okay, there are people living in not doing jobs. Probably they're housewives who have more understanding or who are more clear on their priorities than we are. Yeah. तो माइक है तो कुछ भी. प्रॉब्लम है हम इतना सोचे, सामने वाले इतना सोच नहीं रहे हैं, बट ठीक है उनका एजेंडा अलग है. हाँ, पर मैं भी कह रहा हूँ कि that's also an assumption ना कि how do you word कि clearly, okay? मतलब again if I have to word it out कि there is a problem, okay? कि there, of course, because we have the privilege of sitting outside, we have the privilege of like spending a lot of time thinking. Spending a lot of time taking up, information from different sources, talking to people who have a very global perspective, okay? तो हमें पता है कि हमारे देश में जो हो रहा है सही नहीं हो रहा है. इसमें कोई मतलब हमारे आपकी कोई बहस नहीं होगी, ठीक है? एंड इसलिए हमें लगता है कि जिन लोगों को लगता है कि सब सही चल रहा है वो अनअवेयर हैं, अनएजुकेटेड हैं, या उनके पास टाइम ही नहीं है प्रोसेस करने का, which is I think partly true, but partly again it is their life experience, okay? उनको नहीं and I फर्क पड़ा. feel it is very elitist. Like it's not okay. We need some fun. The problem is कि आपको स्ट्रक्चरली हमारे साथ सिस्टम इतने बायस हो चुके हैं कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होना लाजमी है कि हम क्या कर रहे हैं. हाँ, चाहे न्यूज़ हो, चाहे कहते हैं इलेक्शन कमीशन हो, चाहे जो भी हो, एवरीथिंग विच इज सपोज टू कीप डेमोक्रेसी इंटैक्ट,
or you know As far as freedom of possible, yeah, is sort of, you can see कि it's नहीं हो not really functioning the way it should be and it's functioning. going downhill also. Yes, and of course there's concern. But the arrogance to think कि उसका alternative हम लोग हैं. Opposition. We are the opposition. यार मैं देख रही थी अभी कि I was watching न्यूज में ना कि अभी जो ये विंटर सेशन चल रहा है पार्लियामेंट में, उसमें ऑपोजिशन को मुंह नहीं खोलने दे रहे, ठीक है, उसमें उनको bully करके निकल जा रहे हैं. I'm like, the entire purpose of doing probably, you know, like outrages, like in my head used to be earlier, कि अगर हम ट्विटर पे बहुत हल्ला मचाते हैं तो some news will pick it up. Yeah. Then news से probably someone who can voice it in the parliament will pick it up. Yeah. And then that is the highest place Level you can of- reach, yeah, okay, yeah. if you're saying something anti-establishment. Yeah. And then because of that discussion, something will happen, okay. Yeah. अब जो उन्हीं को मुंह खोलने नहीं दे रहे हैं, तो क्या फायदा ये सब का? and फायदा है, मैं वही कह रही हूँ कि of course I'm trying to make it light. We have seen कि farmers protest का कुछ फायदा निकला है, Yeah. चीजें करने का फायदा होता है, but I'm saying the amount of importance we give ourselves कि अगर मैंने आज ये नहीं किया, okay, तो मुझे आज नहीं जान पे खेल के एक जोक बनाना ही है, okay, जान पे खेल के कि नहीं, तुम थोड़ा जिंदा रह लो ना थोड़ा time. With this ideology, just stay alive, okay, and probably influence people with your actions, okay. That might be more helpful than, you know, getting like Yeah, survival is most important, no? And they say living well is the greatest revenge also. Yeah, but again, this is again my. I don't want. एक तो हर चीज बोलते हुए लगता है कि यहाँ से अटैक होगा, यहाँ से अटैक होगा. Is it going to come from left or right this time? पर ये बोलना जरूरी होना ही नहीं चाहिए कि this is my point of view, that is understood, but ये हर बार बोलना पड़ता है. हाँ कि भाई क्योंकि हम और आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू की बात करते हैं ना. आई थिंक कल्चरली वी बिकम पीपल हु, अगर आप ऑनलाइन हैं तो ऐसा कि आपको ब्लैंकेट स्टेटमेंट्स मार देने हैं, ठीक है, दुनिया भर के बिहाफ पे. Yeah. You think that because social media is now so prevalent, which was not the case 10, 20 years back, so government is also under extreme scandal, which earlier governments were not part of. Probably worse things have happened in the past, but there were no TV channels. Now we complain कि news is. हाँ, मतलब ऐसे कहते हैं ना कि आई यूज्ड टू लाइक, अगर से इसको प्योर डेटा एनालिसिस के टर्म में देखें तो हमारे पास इसको प्रूव करने के लिए बहुत बायस डेटा है. मतलब ये सरकार भी अपने आप में बहुत यूनिक है. like if it was one of the normal governments, okay, Coalition government or like what, you know, कि it was the kind of government जिसके अपने problems होते. Of course, there used to be corruption, there used to be nepotism, there used to be any number of issues. But अगर वो template में चल रहा होता काम, or social media was a factor, then would have been able to like make a stronger statement कि social media की वजह से ये लोग अब ऐसे behave करने लग गए हैं. यहाँ पे तो behave करने वाले लोग ही अलग हैं. Correct. I think the big problem is कि हमें most of the time we are disappointed in not in those people, in people who are electing or selecting them, right? And they are part of your own country. Yeah. And what happens is कि we at some level don't see कि उनका point of view क्या है, कि जो उनको They are part of your school WhatsApp group. They're closer than you think. कि उनके लाइफ में ऐसी क्या कमी है जो उन्हें, you know, ये नफरत का politics is what really like gives them this kick. Also, they draw the identity from that leader or from that religion. Again, it's our privilege, right, that we get to draw our identity from more esoteric things. But most of your country is not that. Yeah. It is कि उनको उनकी लाइफ में कुछ है ही नहीं, और वो इससे आइडेंटिटी वो अपने आप को सुबह के ये ना बताएं कि हम जिस सरनेम के साथ पैदा हुए हैं. That means we are king of the universe. That's why most of my family is like that. कि और कुछ है ही नहीं, हो ही नहीं रहा उनकी जिंदगी में, या you know कि it's जैसे हमने डिजाइन में चले जाते हैं कि we with all our privilege, elitism, esoteric, whatever, okay, existentialism, we also know कि ये thought process जो है वो actually more honest thought process है. If I, for example, face my demons and actually accept the fact कि say that maybe I have I'm socially awkward, for example, ठीक है, अगर ऐसा होता ऐसा है नहीं, कि जो मेरा असली इश्यूज है वो मैं बात नहीं कर सकती उनके बारे में. Just give me an example. कैसे हमारे होता है कि हमारा एक फंडामेंटल इशू होता है, हमें एक एट सम लेवल पता होता है कि ये इशू है, लेकिन इसको सॉल्व करने में अब पूरी मेरा एग्जिस्टेंस हिल जाएगी, तो आई वुड जस्ट पार्क इट समवेयर एंड लिव विद सम अदर स्टोरी और नैरेटिव, राइट?
उन लोग की जिंदगी में वो इश्यूज 20 गुना ज्यादा कि अब जो वे मेरे खानदान के लोग हैं उन्हें पता है कि वो कभी भी अब इतनी उम्र हो चुकी है, इतना कम एजुकेशन है, फाइनेंशियली इतने कर्जे में है कि ये जिंदगी अब बहुत इम्प्रूव नहीं होने वाली है इसके बियॉन्ड. एंड लॉजिकल लोग लोगों कि यार इसमें आधी गलती तो सरकार की है. हाँ, मतलब हमारे शहर में क्यों नहीं आई अपॉर्चुनिटीज, हमें क्यों नहीं मिली एजुकेशन, ब्ला ब्ला ब्ला. पर वो अगर करने लग गए, या फिर ये कि हमारी भी गलती है, हमें इतना बायस के साथ बड़ा किया गया, इतना हमें सिखाया गया कि तुम ही राजा हो, तुम ही कुल दीपक हो, या सो मच एंटाइटलमेंट के साथ हम बड़े हुए कि हमने पढ़ाई लिखाई नहीं करी. ओके, इट्स सो मच टू हैंडल. एंड कि ये सोच के भी कोई फायदा नहीं है क्योंकि लाइफ इसके साथ इम्प्रूव तो होने नहीं वाली. कि वो सब सॉल्व करने की जगह इट्स सो मच ईजियर टू बी लाइक कि दिस इज नॉट आवर फॉल्ट, इट्स बिकॉज द अदर पीपल हु एग्जिस्ट इन दिस कंट्री who are taking our rights. Okay, so much easier, yeah. And you just keep pushing that blame to Mughals, to Britishers. Yeah, it is. It's sad, but I'm saying, and that's why I hate people who. होता है कुछ लोग जानबूझ के जहर बांट रहे होते हैं. So of course I hate the educated people sitting in media houses, for example. Oh, man. Who know, who've made this into a business, who know what they're doing, who have benefited from all the good things this country has to offer, but are now making this country, can't have the short sightedness कि अपने पैसे के लिए they will make this country into something which is not livable. Okay, I have a lot of angst against them. बट इफ यू आस्क मी कि ये जो सड़क पे जो फॉलोअर जा रहा है, जो आदमी इस सब में बिलीव कर रहा है, कमेंट में बोल रहा है कुछ. हाँ, कि उस पे गुस्सा आता है मुझे कि अभी इसी वीडियो के कमेंट में लोग क्या क्या आके बोलेंगे. ऑफ कोर्स आई विल फील बैड, बट आई आल्सो हैव एम्पैथी कि यार कि तुम्हारी लाइफ की स्टोरी में यही दिस इज हाउ इट मेक्स सेंस, जैसे मेरी लाइफ की स्टोरी में दिस नैरेटिव मेक्स सेंस. So things can't be any other way in many cases. Yeah. And even I come to the same conclusion, but then that doesn't mean you stop trying. You keep trying in your own small way. Correct. कि वो ना कि कई चीजें कर देने से बहुत फायदा हो जाता है कि आप मुझे at some point when I was very sad, like, and of course कि 2020 was very disturbing in the sense it started with like this CA NRC protests, people actually getting on streets, you for the first time questioning your own like this कि मैं इतनी insensitive थी क्या इतने टाइम तक जो मुझे ये सब चीजें दिख नहीं रही थी. How it is that I am waking up to this shit right now. All that happened, then pandemic, lockdown happened, then you wake up to more problems in your country, that people are walking back home, there's so much like this. You're like, it is bad, but you are seeing it is this bad, and you are fairly comfortable compared to what is happening to people. तो तुम क्या करो? I think you can get very lost with that. But I think that at some level, at some point over that year, I realized कि there are things you can do and you just do them. कि अगर आप it makes a lot of difference अगर आप for example 4 लोग की जिम्मेदारी ले लो. एक जिम्मेदारी भी लाइफ की भी जिम्मेदारी मत लो, 4 लोग की you just decide कि there are 4 people in my periphery. Okay, it could be the domestic help that comes to your house, could be one person, your security guard, could be someone who you decide to help online. You as a person, you probably have limited bandwidth. 4 is enough. You invest in 4 people, and that is it, because हम honestly वो भी नहीं कर पाते. हम इतने overwhelmed हो जाते हैं अपने thought process में कि हम कुछ भी नहीं करते फिर. I remember my biggest thing, I was so lost in this thought process कि मैं वो लॉकडाउन के टाइम पे निकल के वो दूध या कुछ खरीदने गई. पता नहीं कि मैं इतना zombie होने दी, कोई आके कुछ मांग रहा है, कोई someone from the street begging for something. I'm not listening to that only. Like I took my thing, I'm just ignoring this. Okay, and then this person started, of course, becoming more loud, and I'm like, ये मेरे सामने है, ठीक है. मैं न्यूज में वो पिक्चर देख के आई एम सो डिस्टर्ब्ड दैट आई एम नॉट नोटिसिंग दिस पर्सन. ओके, a small help, no, it's momentary, but it's still a help. ये कैसे, and this is how most of us are going through our lives right now. Yeah, I've met activists and all who are working in their own small way, and I feel sometimes that they are contributing so much more than we are, because in a small sphere, like you said, they're changing people's lives. Correct. And they need not come out on the street and protest and put a bullseye on them, because they're still doing a good job for a few people. Correct. I think and a lot of these activists so endearing to see कि they have their priorities right. They know कि
the task to be done is a lot more important than their identity in the it. rhetoric. कि then this जहाँ हम लोग बहुत easily lost हो जाते हैं कि we are not consciously doing it most of the times for people to come and pat our backs, but we are subconsciously a lot of times doing ये it. ऐसा है ना, स्टेज पे खड़ा रह के हीरो बनना है. A lot of it is so self-absorbed. Correct. So much of the problem with Twitter also is not just comics, but you can see the reason why this person is reacting so quickly to this is because this person wants to be the first person to react to this instead of spending like 5 days doing research. Okay, because 5 दिन तो बात ही खत्म हो जाएगी. So like this is very sad because you genuinely believe that you're doing this for the cause, but if you waited for 5 days, you might be like you might be just आप ऐसे react करके आप people are noticing you, but you're not changing even one opinion. 5 दिन बाद अगर आप थोड़ा उसको और nuance के साथ present करते तो शायद आप एक जने का opinion change कर पाते. All the comics were doing that deep Twitter search to see कि कोई buzzword है क्या, क्योंकि people are digging up old tweets and they're telling me to be I'm sure I have nothing, but still बहुत बुरा लोगों ने, मैंने कर लिया, कुछ भी नहीं निकला. Because I also started doing this later in life. I can understand the younger comics just going at it. मैंने तो कभी ट्विटर किया ही नहीं, लाइक वो तो मुझे कभी चस्का ही I think the problem with me also is that I'm not a very verbal comic in the sense कि smart words or smart lines is something I don't do. How to put it? You're being humble. Come on. नहीं कैसे बताऊँ मैं ये चीज? I have never been you more of a narrative style. कि set up punchline example या फिर कि 2 line में कोई चीज बहुत smart वर्ड क्लियर कर देना, वो कभी स्किल ही नहीं रहा. ठीक है कि अब जो लाइक फॉर एग्जांपल कभी अपने इसके बीच में भी सेट के बीच में कोई अगर इंसाइट अच्छी आती है तो इंसाइट इज जस्ट it's not like a great word play, it is just a good insight sometimes. Okay, so words has never been my like skill or strength. So that's why वो ट्विटर पे जाने का कभी चस्का ही नहीं चढ़ पाया. It's good, I think, in hindsight. Does life get better in your 30s? आप तो ऐसे पूरे से भी आपका आया ही नहीं हो. हम तो सिर्फ इंटरव्यू ले रहे हैं ना अभी. I think in many ways. I think वो again ये तो बहुत ही ऐसा सवाल है ना कि this question essentially means कि अभी आप ठीक हो कि नहीं हो. ठीक है. तो I think your lived experience, again disclaimer for everybody, everything is a lived experience. कि it does get better in the sense कि the way I think एक तो सोसाइटी आपको इतना सिखा के रखती है ना कि जैसे जैसे बड़े हो गए लाइफ खराब होती जाएगी. So you anyways expect less, okay? And then when you come in to this life stage, you're like, dude, there is such little nonsense in my life now. Okay, you have your priorities sorted. You actually see merit again कि बचपन से बोलते आ रहे हैं कि अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए. That becomes your anchor in whatever you want to do. Till we are 30, fuck it up. Okay, totally. कि ना सो रहे हैं ना खा रहे हैं, सब कुछ भी कूड़ा मुंह में डाल दे रहे हैं. ठीक है. Your idea of fun is just to put random junk in your mouth, okay, or get drunk or whatever. You never realize कि that wisdom has so much merit to it. So you start focusing on your health. You start focusing on your mental health. You have like most of us have zero tolerance now for people who do nonsense. Like कि आपको कितना आसान है ना बोलना कि नहीं मुझे नहीं बात करनी है. नहीं मुझे नहीं आना यहाँ socialize करने के लिए. Okay, so how it's like when कोई cartoons रहता है ना कि I would like कि even if you pay me millions, I will not go back to my 20s. That's true, okay, but also I think in your 20s you could not foresee it. आपका अलग ही मस्ती मजाक चल रहा था. So, कोई ऐसा regret नहीं है, but definitely I'm like, oh my god, कितना pain सह के. But do you feel comfortable in your own skin now? That also takes time. For me, I think I've been fairly comfortable in my skin for like even my 20s. I think I was pretty okay. ऐसा मुझे कभी खास that is in one thing कि this weird confidence मैं तो ठीक ही हूँ has been there, but हाँ ये तो हो गया है कि
it's not, again, this whole validation point, for example, which used to be, even till a few years back, it used to be more theoretical than practical. कि आप discuss कर लो कि लोगों की validation भी जीना नहीं चाहिए. But you're still thriving at that. You still want that. You still want to put an Instagram post and, you know, see कि क्या चल रहा है, कौन like कर रहा है, कौन नहीं कर रहा. So I think that thing which used to be more theoretical has become like has actually become practice now. Because slowly see कि वो सही में फर्क नहीं पड़ता यार. कि even for example, you know, when you bomb, you develop the kind of maturity where like jokes नहीं चले हैं, ठीक है, मतलब जिंदगी खत्म नहीं हो गई है. They don't hate you. Okay, your jokes were not good today, or you were not in the zone today. तो वो एक जो सेपरेशन होता है, you know, आपका आइडेंटिटी का, हाँ, वो हो गया. Because even self-image wise, people take time to. They may be like good-looking, hot people, but at the personal level, you don't feel comfortable. It takes some time. Yeah. Sometimes क्या for a lot of people it takes a lot more time. And मुझे तो बहुत sad भी feel होता है कि maybe people like you and me, we have sort of like we've not grown up on this culture, तो हम तब भी हमारी इतना माइंड फक हुआ इसकी वजह से. बट वो ना को मैट्रिक्स में हम जल्दी से घुस के निकल आए. Some people are like most of the young people you see are like have been born in the matrix in a way कि they are with the camera on all correct, the time. कि they are like they were teenagers या उनके early 20s से उन्होंने यही देखा है. तो आप जो उनको बोल रहे हो उनको समझ में भी नहीं आ रहा. तो like my wish for them would be कि maybe क्या पता इसी में they will evolve somehow and see something that we are missing out on. But otherwise तो मेरा था कि हम बच गए. कि हम फंस गए थे, लेकिन हमें निकलने के लिए हमें एक alternative lifestyle पता था. It was easier for us to compare at least. To be like यार वो ज़्यादा शांत जिंदगी थी. इन लोग के पास reference point ही नहीं है. तो not like this. For example, this when we were young, I remember all women, for example, all girls who grow up watching Bollywood or television, blah blah. Of course, all of us feel like shit about our looks, okay? और उसमें people who are by default more conventionally good looking, जैसे Bollywood ने अगर माधुरी को portray किया हुआ है कि this is how you know good looks are. तो आप जब स्कूल में हो तो जिसके looks सबसे ज़्यादा aligned है with माधुरी श्रीदेवी is the pretty girl, and जिसके सबसे ज़्यादा non aligned है is the not pretty girl, and वो तुम उसी complex में उसी power इसमें रहते हो. But that was the limit of it then. यहाँ अब तो कोई limit ही नहीं है इस चीज की, right? It's like you can. It's nuclear powered now. Yeah, कि हम लोग के time again it was कि this is not something we do. Fame was not something you're chasing, so you focus on. And it's not achievable also in many ways. There's some other world that you only see. दूसरी दुनिया है और असली दुनिया में लोग ऐसे ही दिखते हैं. आपके पड़ोसी नाच रहे अभी तो. Yeah. तो हाँ, अब तो मुझे बहुत वो लगता है यार ये सोच के कि कहाँ बच गए. कि हम लोग वो, अगर मैं इंजीनियरिंग के टाइम पे इंस्टाग्राम चल रहा होता और मुझे कोई बोल देता कि यू नो अगर सा रोज आप यंग होते स्टूपिड तो होते हो ना. तो कि अगर आई वाज गेटिंग किक्स आउट ऑफ पुटिंग माय ब्यूटीफुल पिक्चर्स ऑन इंस्टाग्राम एवरी डे और कंपेयरिंग व्हाट माय बॉडी लुक्स लाइक कंपेयर्ड टू अदर पीपल, मैं कुछ नहीं करती काम में यार. How do people get any work done? I really wonder. अभी काम नहीं है मेरे पास. Office type of काम नहीं बचा अभी. After the pandemic especially, I feel how do you get shit done if you're studying or if you're working in an office? कितना distracting है. मुझे तो हाँ, that's commendable also कि about people who actually do get work done. I think डंडे पड़ते होंगे फिर करते होंगे और क्या होता होगा. Even before all of the social media, it was so difficult to see. कैसे बताऊँ मैं कि जब मैं इंजीनियरिंग के बाद काम करने गई, फिर MBA के उसका काम करने गई, none of this influence was there. But even then you see in a corporate environment, for example, there is so much value given to faff and such little to actual work, okay? And उसमें कुछ लोग किसी तरह navigate करके अपना सच ढूंढते हैं, okay, and try to focus on work, and you know they realize कि all this is bullshit, okay? Imagine that bullshit now getting multiplied to I don't know what level. And in your pocket all the time. कि आई थिंक वो जर्नी बस डिले हो जाती है. कि हम सब लोगों ने वो जर्नी की है. कि मेरा भी वो टाइम था जब इफ यू जस्ट अगेन इन नॉन सोशल मीडिया टर्म्स
कि वो दैट शैलोनेस कि आप MBA किया फिर आप काम करने गए और काम पे आपको सारा वैल्यू जो हो रहा है वो ये दिखाने से मिल रहा है कि आप कितना काम कर रहे हो। वो तो हम सब ने किया है, फिर हम सब ने वो मैट्रिक्स छोड़ के हम निकले हैं, ठीक है। तो इन सम फॉर्म हम सबका वो साइकिल आता है और फिर आप एज यू ग्रो ओल्डर यू लाइक नो आई वांट टू फील गुड अबाउट व्हाट आई डू, नॉट आई लाइक व्हाट इज सीन इज नॉट इम्पोर्टेंट, व्हाट आई फील इज मोर इम्पोर्टेंट। आई थिंक हम लोग का वो आके चला जाता है। That's very interesting. So you're saying only the माध्यम चेंज हो चुका है. माध्यम चेंज हो गया और माध्यम बहुत मैग्नीफाई हो गया है और वो ये कि इट्स जस्ट आई थिंक वो जर्नी बस अब थोड़ी और जर्नी टू सेल्फ अवेयरनेस और वेयर यू सपोज टू कम टू व्हिच ऑल ऑफ अस विल कम टू एट सम पॉइंट। वो आई थिंक हमसे कि कोई और किसी और एनवायरनमेंट में बॉर्न होता फॉर एग्जांपल व्हिच वाज क्लीनर लेस फुल ऑफ शिट, तो शायद अपने अर्ली 20s में यहाँ तक पहुँच जाता। हम लोग को 30s लग गए एंड आई थिंक दिस जनरेशन विल प्रोबब्ली टेक more time to get there. Yeah. They do seem very self-aware, like if you go by the memes, but it doesn't. If you go by memes, that's all you got to go by now. And there's a meme page for everything now. So for every kind of vice, there is a meme page. So it's just getting more confusing, I feel. And I wrote this recently that after years of meditation and healthy living, in a balanced life, you reach the void inside and you find that the void inside is also horny. So, I mean, self-awareness also has a limitation. Because after that, what do? You still have to live in this world and navigate. Yeah. And some people have liabilities also. I don't anymore. But some people do. So they have to keep playing the game. So I'm becoming a little more empathetic about the younger generation. Every generation says नया वाला चूतिया है, but ऐसा नहीं है ना. They can't be any other way. I think अपना साइकिल होता है। वही मैं कह रही हूँ ना कि ऐसे तो what you're saying is right कि हर जनरेशन को अगला वाला चूतिया लगता था एंड somehow सबने कर ही लिया फिगर आउट ना। उसमें जिन लोग को अच्छा करना था उन्होंने किया, जिनको उसमें लॉस करना था उसने किया। कि आई थिंक ऑल्सो टू अंडरस्टैंड कि एवरीवन इज थिंकिंग अबाउट देयर ओन well-being 100% of the time. तो हमें उनकी इतनी चिंता करने की जरूरत है नहीं। कि this is a statement I think I don't know कहता है कि घर वाले बहुत शादी के लिए पुश कर रहे होते हैं क्योंकि उनका ओपिनियन बहुत ये रहता है कि यही करना चाहिए and then you end up telling them कि मैं अपने बारे में ही सोच रही हूँ, okay? कि आप अपने टाइम का 5% 10% अगर आप पेरेंट हैं तो फिर 50% टाइम यूज करके मेरे बारे में सोच रहे हैं। मेरा 100% टाइम यही है। मैं सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके ही आपको बोल रही हूँ कि ये अच्छा आइडिया नहीं है। So I'm saying the same That's a new one. I never heard that one before. Have you used this? Has it worked? No, I'm not using it. नहीं, but in life have you used it? हाँ ये तो एक्चुअली पहली बार ये मेरे खुद से मेरी फ्रेंड मुझे बता रही थी घर पर उन्होंने ये बोला, मैंने उनको बोल दिया कि मैं पूरे टाइम अपने बारे में सोचती हूँ। ओके दिस इज सो ट्रू। ओके सो ऑफ कोर्स आई स्पोक द सेम लैंग्वेज टू माय पेरेंट्स बट आई एम सेइंग दिस इज लाइक इट्स नॉट ओरिजिनल, लाइक दिस इज द फर्स्ट टाइम इज माय फ्रेंड्स हेard it. Sure. I now feel look at the honesty, it is heartbreaking. I believe now that no thought is original. And many artists walk around with that burden of being original. And at first, when this sort of dawned on me, again through somebody else only, obviously, it seemed worrying कि फिर हम लोग क्या ही कर रहे थे. But then after a point, I felt lighter because I don't have that burden. Yeah. Nothing is original. Maybe the way you present it is a little different, but that's about it. Like everything you're doing is a aggregate of all the conditioning that you've been through. And when you read very old books, like hundreds, thousands of years old books, and you see the exact same line inside, and you feel फिर हम क्यों ही उड़ रहे हैं? ये तो बहुत प्रॉब्लम होती है। अगर आप किताब पढ़ना शुरू कर दो तो होता है कि हम बोल ही क्यों रहे हैं? Yeah, so this is me and Prashasti telling you not to read. Okay, this is a meta podcast. अगर आपको हीरो फील करना है अपने बारे में, लगना है इंटेलिजेंट फील करना है तो किताब मत पढ़ना। Yeah, ignorance is the easiest way to happiness. Don't read. Yeah, because सब कुछ बोला जा चुका है। Yeah. Do you feel ever that it's better to get popular success later in life than if you were in college that time or in your 20s? मतलब वो बहुत like I think person to person है कि of course for me it had to be this. मतलब I know कि अगर इसके पहले होता and maybe that's why it has been like this also कि I'm very grateful that like fame came to me at a time or whatever fame came to me, it came at a time and I was sort of equipped mentally to handle it. Yeah.
अदरवाइज अगर ऐसा सेट नहीं हो साइकिल और लंबा हो जाता कि अगर हमको 5 साल पहले ये चीज़ होती 7 साल पहले ये चीज़ होती तो आई वुड हैव प्रॉब्ली बी मोर टेकन you know like I would have really been on that ride, maybe it would have gotten into my head. But फिर मुझे भी अगर लगता है कि फिर eventually उससे निकल आती, सब लोग निकल ही आते हैं at some point, but it would have been one way or the other. Yeah. it would probably have been a more like it would have been a higher maxima and a lower minima. I think यही होता है कि अगर आपसे 20 साल के हो, अगर आप बहुत if you're not evolved some kids are very evolved when they're very young also. Most of us are not. Okay, so I know for myself you know average EQ person that अगर 20-25 साल की उम्र में चीज़ होती तो ये बहुत हाई होता और उसके बाद बहुत लो होता because it came to me in my like you know when I turned 30 or 32. It was just this high still came. I still was delusional for a bit कि maybe हूँ special यार वाला ऐसा कितने लोग कर पाते हैं ऐसे I like the data approach she has to everything. I really believe that you're very pragmatic about a lot of things compared to most people I know. But when you start seeing through a lot of the bullshit and the myths and the stories that comfort people, although in delusions only, does it get lonely then? ऐसा तो loneliness is the curse of intelligence मैंने ये तो मैं बहुत रातों में अपने आप को रिपीट करती हूँ ये सब तो नहीं मिल सकता ना आपको कि अभी तो हमारा आपका प्रॉब्लम है कि हम बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं इन लोगों से या हम you know we like you I think many of us realize after a point यार like to this is very undiluted way of living. Okay कि मेरे को अपनी कंपनी अच्छी लगती है. I don't doubt my intelligence at all or how interesting I am at all. Okay, and there are few people who bring so much joy because you genuinely like being around them. वो लोग you can count them on your hands. Okay, your fingertips. And then most of the people, you are okay, you know, with all your empathy in your heart also, you want to feel good about them or you wish them well, but you know कि इनसे थोड़ा दूर रहने की जरूरत है for me to keep wishing them well. कि मैं तो बोर हो जाती हूँ उनके साथ या फिर हाँ कि हाँ correct कि you know, if I'm feeling lonely, the solution cannot be going to a lot of people. The solution is कि to maybe have these 3-4 people who bring me joy, but of course उनका अपना जिंदगी है. Yeah, and even or they to be don't with owe myself. you. So. Yeah. So it is lonely. Yes. So it is, but I think I read about it and there talks also on this कि this is very normal कि a lot of people like feel lonely not because they don't have people around them, it's because they think in a way that is जो bell कर होता है ना again. It sounds like मैं elitist, but I'm saying कि हर किसी का एक personal bell का हो सकता है जिसमें वो यहाँ पे lie करते हैं. I'm saying any person okay who likes themselves. Okay, मतलब अगर X person सड़क पे चल के जा रहा है और X person चाहे जिस भी लाइफ कॉन्टेक्स्ट में हो उसको अपनी जिंदगी अपनी लाइफ बहुत पसंद है तो मतलब कि अगर वो इंसानों का बेल कर्व बनाएगा तो कहीं उस बेल कर्व के इस साइड पे आएगा like high end. Okay, which is again 1% of the people. Okay, बहुत सारे लोग बीच में आते हैं और बहुत सारे लोग इधर आते हैं. These people hate themselves. Okay. These people probably are okay, and these people genuinely like themselves a lot. Could be poor, rich, educated, but these are 1% people in the world who like themselves. Okay, so if you're that, you are bound to feel lonely because you're only 1% in the world. Okay. So it's कि आपको इनके साथ मजा नहीं आएगा. नहीं, आप IPL नहीं देखते तो आप क्या कर सकते हो? क्योंकि you are और आएगा भी तो थोड़े टाइम के लिए आएगा. मतलब आपको कभी-कभी वो loneliness enjoy करनी पड़ेगी या फिर किताबों में हो या you will find company in some author who probably thought the way you thought. Like ये मेरा इसका vibe बैठ रहा है. तो I'm saying I think it's not an original thought. People have spoken about it. I've seen it these talks where they're like कि ये सब थोड़ी मिल सकता है वाला ऐसे. अगर आप इतना अपने दिमाग में आप इतने बड़े हीरो हो तो आपको थोड़ा तो embrace करना ही पड़ेगा loneliness. What have been a few moments in your life where you felt the happiest, like which stand out? Which stand up? Which stand out? Which stand out? Yeah. Like you distinctly remember being very happy on that occasion or that day or for that short whatever period of time it may have been. मतलब ऐसे तो I think पहली बार तो कहना मुश्किल है. बचपन में तो काफी होता है चीजें, but
आई नो कि जब मेरे 10th क्लास में मैंने डिस्ट्रिक्ट टॉप किया था तो I was genuinely it was like the first time you know you properly Happy. I was again मेरे क्लास में ऐसा फर्स्ट सेकंड थर्ड आते रहना was not a difficult task बट वो 10th का होता नहीं कि आपने लाइफ में ऐसा एक गोल सेट किया कि मुझे 10th में अपने जो मेरे स्कूल में जो रिकॉर्ड है आइडियली अगर वो मैं तोड़ दूं या कर दूं एंड आप अगेन व्हेन यू ग्रो ओल्डर you don't think like that anymore. No, sure, at that time it was the world, no? Yeah, and you also there's a certain amount of entitlement involved कि मैं कर सकती हूँ ये ठीक है. So you set a goal, okay, you work towards it, and you really achieve it, okay. So that's very pure textbook happiness. कि and उसके बाद वो ये कि आपको लगता है कि आप जब भी लाइफ में गोल सेटअप करोगे तो बस मेहनत ही करनी है और आप अचीव कर लोगे. Okay, then eventually life tells you कि इसमें 1000 और variables हैं and you are lucky that time. Okay. Things can go horribly wrong. Yeah, this was the simplest way of having a goal and achieving it. It was numerical also. Correct. No, I'm saying कि entrance वगैरह भी होता है कि मैंने IIT में घुसने की बहुत फाइट मारी. Okay, और at some point I got a rank also, but it did not work out for me. मतलब I could not go to an IIT eventually. Yeah. So it was I'm saying कि वो जो fundamental concept भी होता है जो बचपन से सिखाया था कि मेहनत करो और life अच्छी हो जाएगी. Thankfully it broke for me very quickly. Otherwise मैं again I would have been a very arrogant asshole कि you know मेरे अंदर ऐसा मैं इतनी अमेजिंग हूँ कि जब भी मैं कोशिश करती हूँ मेरे को रिजल्ट्स मिल जाते हैं. आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यंग पीपल टू सी कि दुनिया में मेहनत करनी चाहिए पर उसके अलावा भी एन नंबर ऑफ थिंग्स कैन गो रॉन्ग. But yeah, so that was very happy. Then I think college वगैरह में every time I used to organize fests and all. I used to feel very good at the end of it. Again कि आप बहुत सारे लोगों ने मिलकर काम किया, कुछ बनाया, कुछ बहुत अच्छा बन गया. I think स्टेज पे जनरली अच्छा लगता है. अगर कॉलेज वगैरह में लोग कोरियो टीम वगैरह में होते थे. You did some theater also. Yeah. So every time वो and I think इसका चस्का वहीं से लगा है कि वो स्टेज पे चढ़ने के बाद जो यूफोरिया फील होता है वो somehow that probably kept bringing me back to stage in some form. I'm discounting that. Every time we get up on stage is so fucking special because we do it so often. Maybe it doesn't register anymore, but of course you're on a high. Yeah. But those again in your graphical sense, those highs of being very happy, do you see those becoming lower? Because then this also is an oscillation. No? And unless you can feel the depths of despair, you cannot feel ecstasy also. Correct. So you see that oscillation getting lower. I think after a point, I think you reach the kind of self-awareness where you're like, this can, it's like I choose now कि इसमें मुझे कितना खुश होना है. Like ऐसे कि तुम्हें पता है कि this is an altered mental state, and if you go there, ऐसा तो होता भी है कि शो के बाद भी अगर आप बहुत खुश हो जाओ तो अगले दिन सुबह उठ के लगता है कि दुनिया खत्म होने वाली है. It is just you have this much chemical in your brain. आपने रात में यूज अप कर लिया. अब बहुत खुश हो गया. आपने कहा वाह ओके I am on top of the world. You have to be aware कि अगले सुबह वो केमिकल ड्राई आउट हो जाएगा. आपको लगेगा कि भैया. So now I just go into the awareness कि भाई कितना यूज करना है केमिकल. Till the time they have a product for it, you're doing it yourself. You achieved a fair bit of success now. Like you're part of a special also on Netflix, right? So artistically, of course, you can always keep doing more. But in terms of material success, do you still have hunger for more, or now you feel कि अभी हो गया अभी इससे ज़्यादा जरूरत नहीं. अभी तो लगता है कि शुरुआत ही है. मतलब ऐसे कि you know ना कि आपको again if you genuinely invest into your material and everything, you can see कि इसने मैंने पहले ही बोला कि एक चीज होती है स्टेज पे खड़े होके 1 घंटा लोगों को एंगेज रख लेना. आपको एग्जैक्टली जो बोलना है वो बात बोल देने, उस बात को बहुत फनी भी कर देना. उस फनी का भी एक स्केल होता है कि अभी प्रॉब्ली जब मैं डीप बातें बोलती हूँ तो बहुत फनी नहीं होती. ओके प्रॉब्ली आई वांट टू गेट टू अ प्लेस वेयर मैं बहुत फनी भी हो लेकिन लोग बहुत ज्यादा उसको लाइक दिल में टेक अवे भी लेके जाएं. There's so many like sub goals in this goal कि वो तो बहुत अभी बहुत उसमें skill level बढ़ना बाकी रह गया है. But also asking about material success, like in terms of like the money and fame. I thought material. नहीं material in the hour उसका success. नहीं हमारा material तो चलता ही रहेगा. वो never ending है. Oh, you feeling कि saying कि material success. मतलब मुझे अब तो वो समझ में अगेन फंडामेंटली ये बात समझ में आ गई है कि एक सर्टेन लेवल ऑफ लाइफस्टाइल होता है कि आप जितना लाइफ में लाइफस्टाइल अपग्रेड करते जाते हो एवरी नेक्स्ट स्टेप इज अ चॉइस
कि अगर आपने और अपग्रेड कर लिया तो उससे नीचे आना मुश्किल हो जाएगा कि अगर आप अभी आप अंधेरी में रहते हो, अगर बैंड्रा में एक बार रहना शुरू कर दिया तो बुरा लगेगा वापस अंधेरी आने में, ठीक है? Again, this can be shown on the graph also on the map of Mumbai, north-south axis पे. तो हाँ, ऐसा मेरे को अब इतना है कि मैं जैसे मेरे को इतना खास कि पहले मैं जब नौकरी करती थी तो मैं बैंड्रा में रहती थी, फिर आई टुक अ कॉन्शियस कॉल टू कम टू अंधेरी बिकॉज मेरे को अकेले 1 BHK वहाँ पे बहुत महंगे मिल रहे थे, यहाँ पे आ गई. नाउ आई लाइक लिविंग हियर. तो अब मेरा वो एस्पिरेशन भी नहीं रह गया है कि और महंगे घर में जाएं. बैंड्रा आई लव बैंड्रा, ओके, बट लिविंग इन बैंड्रा यूज्ड टू बी अ थिंग अर्लियर, इट्स नॉट देयर एनीमोर. But I still would like to, like, I like living in a house which I want to come back to. So the basics, okay, which have to be called material success or elements of material success only, which is living in a good house, having a place where you feel you can work peacefully. अगर आप हेल्थ कॉन्शियस है तो आप इतना अफोर्ड कर पाओ कि आप खाना वही ना कि खाना हेल्दी खा पाओ कि वंस इन अ वाइल आपको अगर लोगों के साथ सोचना ना पड़े, सोचना ना पड़े, आई थिंक इज द की वर्ड. कि कभी अगर ऑटो की जगह उबर करनी है तो सोचना ना पड़े, या फिर अगर कभी फ्लाइट लेनी है तो सोचना ना पड़े कि एंड वो एक सोचना ना पड़ेगा, मतलब ये नहीं कि आप कि आज ही मैं जाके आज ही लंदन की फ्लाइट बुक करके कट लूंगी. बट इन जनरल एक बेस लेवल की जितनी काम की नेसेसिटी पड़े जिन खर्चों की, उनके बारे में सोचना ना पड़े. तो आई थिंक उतना लेवल के बियॉन्ड एवरीवन नोज नाउ कि इट इज जस्ट सिक्योरिटी, इट इज नॉट, यू वोंट बी एबल टू यूज इट ऑल्सो. कि अगर कि और पैसा आ रहा है तो ठीक है, मतलब कल को पता नहीं क्या हो जाए, that money is your insurance, that money is, if your family members depend on you, that money could come, come to use on a rainy day. Sure, but there's no end to that. How much can you save? Yeah. तो इसलिए I think I realized कि it's not, I don't work towards that anymore. कि it is not कि अब और इतना पैसा बना लूंगी तो और मजा आ जाएगा. वो thought process अब आता ही नहीं है. But I do feel like कि I do things for money still, in the sense कि ऐसा नहीं है कि if there's a brand thing which doesn't contradict my philosophy, for example, if there is a corporate show जहाँ मुझे पता है कि मुझे कम मजा आएगा compared to like a proper ticketed show, but that money is assured. So I would take it up because I'm like, this because of this I am able to free up my expectation of money from my stand-up and my touring. कि अगर ये पार्ट ये सॉर्ट कर देता है तो वहाँ पे मैं खुल के एक्सपेरिमेंट कर सकती हूँ. आई कैन subsidizing your yeah. So I can focus so that's why when I'm touring, when I'm doing my stand-up, when I'm practicing it in Mumbai, मुझे वो हिसाब किताब में टचवुड नहीं घुसना पड़ता कि कि कितने लोग पता है ये लेते भी नहीं है पेमेंट. आए चेसर की भाई ले लो, आपने शो किया था, उनको याद भी नहीं रहता. Do you now feel like you belong in the upper echelons of this city, or you would have to be born here to feel that way, you think, after all the success, popular and otherwise also? मतलब ये आई थिंक मुझे कभी कभी अमेजिंग तो लगता है कि इफ आई एम सिटिंग इन अ मीटिंग विद लाइक फॉर एग्जांपल मूवी पीपल, राइट, जिनको हमने बचपन से ऐसे एस्पायरिंग तरीके से देखा है, नाउ यू जस्ट सिटिंग एंड टॉकिंग टू देम एंड यू रियलाइज कि क्रिएटिवली यू सॉर्ट ऑफ like they acknowledge you. They acknowledge and they respect you. Okay, you might not be respecting them for that matter. Depends on the person you are with. And the point is it does once in a while you are like, wow, how did I navigate to be here today? So that is there, of course. And I think for people like me, I touchwood never, I did not grow up poor, okay? We grew up in a small town. Our parents were educated, were earning, both of them were earning. तो जहाँ पे हम बड़े भी हो रहे थे वहाँ पे कभी हमें ये नहीं फील हुआ था कि कुछ कमी है लाइफ में. हाँ, बट देन यू मूव टू अ बिगर सिटी एंड यू फील लाइक वेरी पर्सनली इनएडिक्वेट, राइट? कि आप उतना स्मूथली बोल नहीं पाते जितना यहाँ पे लोग बोलते हैं. आपके पास स्किल्स बहुत लिमिटेड हैं. आपको बस डिग्रियां हैं आपके पास, लेकिन आप स्ट्रीट स्मार्ट बिल्कुल भी नहीं हो. You don't look presentable enough compared to again how the rich and the elite whatever. तो वो सब inadequacy धीरे धीरे बढ़ती जाती है. But वो है कि after a point you do feel like okay, you know what, all of that मेरे complex resolve हो गए सारे के सारे. And you can see objectively कि ऐसा भी नहीं है कि मुझे ये चीज बहुत एस्पायरिंग लगती थी, बहुत एस्पायरिंग लगती भी नहीं ना कई बार कि कि सबकी लाइफ इक्वली फक्ड है बेसिकली.
तो what I find is कि to answer your question, point number one, yes, it does feel amazing sometimes कि आप यहाँ कैसे पहुँच गए यार. Even comedy में मैं तो मतलब कि watching these people on screen, उनका YouTube वीडियो देख रहे हैं या किसी को वो Canvas Laugh Club में perform करते देख रहे हैं, and you're like, wow, this is amazing. To being friends with them, or spending time with them in sharing the stage room. with them. So all of that definitely, I'm like, how is this happening? It does feel surreal. Like, yeah. So that definitely happens, but also I think with age, with some amount of maturity, you also realize कि again सब लोग equally sad है या सब लोग equally खुश हैं. I have to give it a positive spin. Like वो जो aspiration होता है ना किसी और lifestyle को पाने का, आपको लगता है कि वो हमको ज़्यादा importance इससे है कि the best example would be when I used to work after my MBA. My only pain from my job used to be, I used to genuinely be good at it. I used to make good money out of it. And I was among my other friends also, I was happier in my job compared to what they were doing. Because my job was more, अगर वहाँ पे events थे, marketing campaigns, it was very interesting. TV में काम कर रही थी. Yeah. So, and you had stats to deal with there also. Yeah. So, it was a good mix of everything. It was colorful in a different way. It was very Indian. Okay, it was like Hindi TV. तो वहाँ पे ऐसा शोशेबाजी नहीं थी अंग्रेजी बोलने वाली. वो consulting banking वाला वो नहीं था. It was very people just came and to make things happen. So all that was nice, but I used to miss having, again, in my 1% world, I used to feel I wish I could be around more interesting people. Like, we were all working like machines, and I was like, you know what? I know I will, another set of people will bring out the best in me, and this probably is not that set of people. And then I came to comedy and it solved that. Okay, and for the first couple of years, I was like, oh my God, what an upgrade in life. Okay. But when I look back now, I'm like, अब मुझे यहाँ भी कुछ problems हैं ही. ऐसा नहीं है कि this has solved my life forever. यहाँ भी मैं कितने दिन बैठ के frustrated होके लगता है कि यार ये कैसे होगा, या वो जो stresses हैं इस career के वो अलग हैं. यहाँ भी ऐसा नहीं कि पूरे time सबके साथ मजे ही आते रहते हैं. मतलब यहाँ पे भी you have angst with people. The point is कि you realize कि pretty much if you give it time, everything people can are become. The same everywhere. Yeah. So you don't feel like a sense of destiny in this. It's random and you accept it. मतलब of course I can't unsee the destiny part, and of course I've been genuinely, when it happened for the first time I was like, wow, how could I be? How could this? How I would have landed into something like this by accident, which I enjoy so much. क्योंकि बाकी हर चीज मैंने करने के लिए इतनी fight मारी है, इतना planned तरीके से I've approached it, कि वो है ना कि IIM में जाने के लिए भी इतनी बार attempt दिया है, तो हर चीज मैंने इतनी fight मारी है, तब कुछ हुआ है. Okay, तब I've enjoyed some fruit. And यहाँ पे लोग इतनी fight मारते हैं और मेरे तो बस lap में आके गिर गया. So of course, and then I also discovered that it's something I totally enjoy, and I feel like कि there is an element of brilliance that जो शायद अभी दिखाई नहीं है, लेकिन वो है मेरे अंदर जो आ सकता है और तो वो सब तो है, and I can't, at some level I have to acknowledge the luck part of the destiny part of it. But हाँ वही है, लेकिन my point is कि at some point you also have to acknowledge कि अगर ये ना भी होता तब भी अगर आपको अपनी लाइफ में खुशी ढूंढनी होती तो आप कुछ करके ढूंढ ही लेते. लाइक कि है तो सब अंदर ही ना अपने, कि यहाँ भी लोग, ऐसा तो नहीं हम जानते नहीं यहाँ पे लोग कितने दुखी हैं हमारी इस दुनिया में. But again, when you say luck, I mean, how do you define luck? I think in a godless universe, luck and randomness are the same thing. मतलब वो मेरे मूड पे होता है कभी कभी. That's the right answer. Like genuinely कि again I feel कि हम बहुत प्रेशर डालते हैं ना to underline कि am I into God, am I not into God. Okay, so on some days I'm into God. I have to say on some days I feel like कि यार ये जो है वो अपने आप से ऑटो पायलट पे नहीं हो सकता, ये चीजें, ये कोई ना कोई है, ठीक है, in some form which I can't define. Some days I'm into God and I see it as like a cosmic plan कि सबका अपना अपना एक ऑर्बिट है और हम लोग कुछ भी अगर आप लाइक आप कुछ भी कर लो, अगर आपको किसी रास्ते जाना है तो आपको रास्ता वो दिखा दिया जाएगा, ठीक है. देयर आर डेज लाइक दैट, एंड ऑन डेज लाइक दैट वो दिन अभी भी आते जाते रहते हैं, एंड आई एम लाइक वाओ यूनिवर्स, यू रियली कि नेक्स्ट स्टेप क्या है बता दो अब, ठीक है, इफ यू हैव गाइडेड मी सो फार टिल हियर. But on days when I am feeling godless, I also feel like clearly, there is a pattern here in the sense that I loved stage from the beginning. Okay, and ये सब दिखता नहीं है कि मैंने बहुत फाइट मारी, पर the fact that जब मैं 4 बार कैट दे रही थी तब भी मैं साथ में
पूरे time साथ में, I was doing You something. just didn't resist it because you liked it so much. It didn't feel like struggle. I think if I have to define it in very godless terms, I was like, you know what, it was part of my personality to always try to find what else there can be to life than this. And चाहे मैं college हो, चाहे काम हो, चाहे MBA हो, I've always been कि सिर्फ इतनी तो life नहीं हो सकती. Like, you know, what else is there? Yeah. What else can I try to do Yeah. which will make it more interesting? And somehow all of it which is happening is sort of logical consequence of that. But I think the God logic is more beautiful. It's more sellable also. So you feel in this profession now, when we have to travel for shows and even otherwise, it's becoming increasingly difficult to be with a person who is a civilian. Because our routine is so different. We work on weekends. Other people only have weekends to spend But time. अब मैंने तो इतने साल से किया ही नहीं है, तो मेरे को आइडिया ही नहीं. Genuinely, I can't answer that question. I'm guessing it must be difficult, but like for me, I can answer in terms of friends. कि definitely, जब तक मैं नौकरी करती थी, तो I used to meet my friends a lot more often. We used to have similar schedules. कि weekday पे हम सब काम करते हैं, तो महीने में 2 वीकेंड, तो अगर कम भी होते जा रहा है तो एक वीकेंड पे हम सब प्लान बना के मिल लेंगे, मुंबई के एटलीस्ट जो लोग हैं. अब ऐसा नहीं होता क्योंकि वो लोग वीकडे पे काम करते हैं, मैं वीकेंड में बिजी रहती हूँ. बट द गुड थिंग दैट हैपेंस इज कि बिकॉज आई ट्रैवल अक्रॉस सिटीज, आई एंड अप मीटिंग मोर ऑफ देम इन द सेंस कि हर बार शायद नहीं मिलती होंगी. एंड कि फ्रेंड्स के बियॉन्ड में एक तो फ्रेंड्स का सर्कल होता है जो ऑफ कोर्स दे आर योर फ्रेंड्स, कि आप बहुत टाइम बात ना भी करो तब भी जब फोन उठाओगे तो इट इज बैक टू नॉर्मल. बट आई थिंक द नाइसर थिंग इज कि उसके बियॉन्ड एक सर्कल जो और होता है वो भी थोड़ा मेरा वापस अलाइव हो गया है. कि मेरे कॉलेज के कुछ लोग, मेरे बी स्कूल के कुछ लोग, काम के कुछ लोग जो अलग अलग शहरों में हैं, कभी शो पे आ गए तो अच्छा लगता है उनसे मिलके. तो I'm saying वो ये कि there is like, of course there is you know a sad side to it, but also there is this one positive side कि मुलाकात तो बहुत लोगों से हो जाती है. I can see that your sense of duality is just melting in all aspects of life. इसके बाद हम करेंगे भी नहीं, next episode आने नहीं वाला है. Because there will be no need, there's nothing worth saying. Because they do say that in reality, nobody really communicates, you only talk to yourself. Like even the interviewer is asking you what he's trying to deal with himself. And even you're answering in your whatever, your own small universe. And no actual communication is actually possible. But again, there are days. I think there are days is a very good. There are days. Hey, that's a good name for a show also. There are days. किसी को समझेगा नहीं. You would have heard this from a lot of people. We keep hearing it all the time that there are only fewer women in stand-up and they only talk about certain set of topics. And ये एक meme बन चुका है अभी. And is there a better answer than saying that it's their fucking call what they want to talk about on stage? I hear it from everybody, like friends, audience, venue owners. When I think about it, it is again a natural progression. कि जब, of course, when you see women comics right now, you see them in contrast to what is the standard of comedy right now in the country, right? जब शुरुआत में जब only men used to do comedy, and the standards in general were low, तो सब open mic में आके यही बात करते थे लड़के लोग भी, अभी भी करते हैं in fact, but it was just less looked down upon then. Okay, मतलब the system evolved, people started doing better comedy, and then you know लड़कों को बताया कि ये इतने लंड वाले जोक नहीं करो, ठीक है, थोड़ा अच्छा जोक लिख के लेके आओ, ठीक है. Because young people, of course, and it's a very natural instinct कि the easiest thing to make funny is कि अभी दिल टूटा है, अभी सेक्स किया है या सेक्स नहीं मिल रहा है. It's just like a young person instinct कि तुम बातें बोल नहीं पा रहे तो स्टेज पे जाके हम बोलेंगे, ठीक है. तो point number 1 is कि in general that's evolution of a comic I have seen a lot of times. Unless you're a very evolved person before you start comedy, it'll happen. I can see with me also that when I start doing comedy, the most natural thing, I was doing very well in my job and everything. The thing I was not finding expression for was my love life. Okay, so I started there shitting on people I used to go on date with. I hate that now. Like there's that temper of comedy.
That was a great set. And I still stand by it because Yeah, Didi was a at great that set. time वही सारी insecurities का एक जवाब वो वाला ना. That was a good set. but my point is that version of me found that as a great content At that and I time. stand by it. Yeah. But my point is now I can see I would not want to do it exactly like that anymore because I'm evolved. I feel like why bitterness can be easily made into comedy. Okay, कि किसी और से आप मिले उसके फिजिकल एट्रीब्यूट्स के बोलने के तरीके उसके बायसेस ओके उसके ऊपर आप जोक्स बना दो एंड एवरीवनस हैप्पी ओके बट देन यू ग्रो आउट ऑफ इट ओके एंड देन यू वांट टू डू न्यू स्टफ एंड दैट्स अ ट्रैजेक्टरी एवरीवन हैज or everyone is a strong word many of us have okay men have had it okay but when men were doing it in India the standards of comedy were not people were not watching that much international comedy in general जो लोग अब अच्छी कॉमेडी कर रहे हैं वो भी इसी मिक्स का पार्ट थे तो इतना स्क्रूटनाइज होता इन जनरल मेन को लोग कम स्क्रूटनाइज करते भी हैं हम सबको पता है ठीक है so now when this cycle of women comics is growing okay now हम लैग पे चल रहे हैं है ना तो एक तो ये नेचुरल है ये होगा ओके और दूसरा एक और चीज जो लोग अगेन आई वुड लाइक टू अंडरलाइन इज कि अगर आदमी के लिए लंड बोलना इतना इतना फ्रीइंग है स्टेज पे आप खुद सोच के देखिए कि किसी लड़की के लिए कितना फ्रीइंग होगा यार हम लोग कि हम लोग को तो इतना ज्यादा सिखाया था कि ये नहीं बोलो वो नहीं बोलो plus our bodies fuck us up so much more like I was telling someone right now ki I ki when it comes to I still for example a lot of my content is even though I don't shit on people I go on dates with anymore a lot of my content is around angst of romance only right or in some ways angst of being a woman okay and I'm like कि मेरा इतना एंग्स्ट है जिंदगी में कि मुझे नहीं दिखता कि नल टपक रहा है यार मतलब वो प्लम्बर फिक्स कर देगा okay so there are topics which men can't understand okay that they bother us so much and so many times that everything else pales in comparison in a purely physical way in a lot of cases yeah कि अगर I'm saying if women are talking about periods it is not एक तो of course it has been such a taboo thing to do secondly you should have periods okay to understand कि अगर आपके होंगे तो आप किसी और बारे में बात ही नहीं करेंगे ठीक है so it's a curve again it's a curve I'm not saying कि this should be done और हमें यही करना चाहिए सबका अपना अपना है but I'm saying कि what we do ignore is कि एक तो ये cycle of maturity है access नहीं है अभी तक इतना हाँ cycle of maturity है बोलने को allowed नहीं था बोलने को मिल रहा है and third they are topics that you can't understand how important they are to us और हमें the thing is हम again you have to understand कि this is again something that I developed perspective on very recently कि even though a lot of women are now doing comedy there's still very limited diversity in terms of the women who are coming in right कि most of the women 30 के ऊपर वालियां जनरली अभी भी शादी करके खत्म कर देनी अपना करियर राइट कि you have to understand कि आदमी लोग किसी भी उम्र में शादी बच्चे के बाद भी आ रहे हैं ओपन माइक करने के लिए it's an industry skewed towards younger people but I'm saying still you find a spectrum of people when it comes to men in comedy right now religion wise also economic spectrum wise also age wise also among women most women like fall in this young they're urban they are young because those are the only people who are getting some amount of liberty to do this highest form of privilege like the families are also very more open here typically Delhi में इतना खराब सीन है यार कि you can't blame the male comics there for like the city is such कि अगर 11 बजे का ओपन माइक कर रहे हो 10 का कर रहे हो 9 का भी कर रहे हो इतनी बड़ी सिटी है इतना डर लगता है वहाँ बाहर निकलने में कि always the number of people or the kind of people who will be doing this if a girl is rich enough to probably drive around on her own she'll probably turn up for the open mics regularly and even then it's not completely तो again कि वो diversity हमारी कम हो जाती है ठीक है कि people who slightly more grown up more educated okay and they are women they typically they're not allowed only to उनके पेरेंट्स उनको पढ़ाई करने का दे दिया यार इजाजत की अब तुम वो सब छोड़ के कॉमेडी करोगी शादी नहीं करोगी वो तो कहाँ होता है मतलब कि अगेन आई नो कि
I am an exception because of how my family, because my father is not there to put pressure on me. If my father was alive, things would have been very different. Yeah, तो absolutely. तो अब ये तो है ही. तो I'm saying कि of course the trolls will comment and say कि ये लड़कियां यही करते रहती हैं, but you have to understand it's a much in the larger scheme of things exactly यही होने वाला है थोड़े टाइम तक. The sense of inevitability in everything she says is. मुझे लगता है कि again कि हम लोग अपने आप को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं. सब कुछ बेसिकली बहुत बड़ी बड़ी स्कीम के चलते हुए रहा है. And if we had enough data, we could explain it. If we did. Yeah. You ever think of like a long-term personal goal, like 10 years from now, not professionally, not artistically, personally, what space you would want to be in? Because we often forget the very basics of life. Like if you want to live a good life per se, it's possible even right now. You go to Himachal, खत्म है ना बात वहाँ पे, सब बेसिक्स है ही वहाँ पे, बट वी गेट टू इन्वॉल्व इन सिटी लाइफ एंड इन अचीवमेंट्स एंड इन आइडेंटिटी एक्सेट्रा. But eventually, you'll have to come to terms with that also, because after the show is over, you're just another person. Like, after the lights go off, you're just another biological entity. So do you think in those terms that like in your 40s, where would you want to be in a personal space? मैं ना सोचती नहीं हूँ, लॉन्ग टर्म में सोच नहीं पाती, पर आई थिंक like I struggle very much to think even 5 years from now, because again life has been so like it's changed so much कि 5 साल पहले तो मैंने कॉमेडी शुरू भी नहीं किया था ठीक से. So I'm saying to actually think कि 10 साल बाद क्या करूँगी, I don't know, but I think what I do have awareness for is कि to be very open to the fact कि probably ये नहीं कर रही होंगी. Probably, maybe I would be writing in some other form. Maybe, it would be way of expressing yourself, which is not this immediately dependent on, people. Stage and people, on stage. But I don't know. Right now, I'm enjoying the stage a lot. Like this format exactly, doing stand-up is what I love and what I thrive on. Great. So it's possible कि अभी तो मुझे इतनी strong feeling, like आपको प्यार होता है ना, कि जब प्यार होता है आपको लगता है कि ये तो रहेगा ना जिंदगी भर, ये थोड़ी चला जाएगा. कि अभी इतना फील हो रहा है, तो इसका अगर 1% भी फील होता रहे तो शायद जिंदगी भर हम काट लेंगे, फिर वही चला जाता है. खत्म हो जाता है. You realize कि अगेन आपने वो सब एक बारी में मैक्सिमम अचीव कर लिया. You only have this much for everything. I can see a show happening on a whiteboard very soon. Every joke can be explained. अरे किसी को समझ में नहीं आता. But my point is कि so that's why you can never tell कि I know the only awareness I've developed is कि अगर मैं थोड़ी कुछ साल पहले आंसर देता बोले कि यार स्टैंड अप ही तो करना, यही मेरी जिंदगी है. But now I'm like अभी तो यही है, but you never know किस चीज में इवॉल्व हो जाएगा. So but I think are you living in the moment and as the speakers keep saying? मतलब इन्हें एक ऑप्शन भी किया. I think I genuinely try to. Of course, the brain. I don't have that much control over my brain कि आगे पीछे जाए ना. नहीं काफी कंट्रोल है इनका. हम अरे अभी तो ऐसे माइक पकड़ के बोल रहे हैं ना, परफॉर्मेंस मोड. बट आई थिंक कि वो तो होता है किसी ऑटो में बैठ के I'm like अभी just be here. It goes on. Okay, so no plans as yet. You don't have any. मतलब वही कह रही हूँ कि अपना किसी ने मुझे बोल दिया ना कि अपना कैनवस बड़ा रखना चाहिए कि तो मैं करती हूँ कि अपना कि अभी when I'm enjoying stand up also I look at what else am I enjoying. तो अगर स्क्रीन राइटिंग इज समथिंग जो मुझे आती नहीं है ठीक से, लेकिन थोड़ा बहुत मुझे मजा आता है डायलॉग्स लिखने में, तो वो मैं अपना पैर डालती रहती हूँ थोड़ा बहुत कि जो भी बहुत फाइट नहीं. लकी पार्ट अबाउट दिस इज कि वो सब अपॉर्चुनिटीज मिल जा रही हैं. तो मैं थोड़ा थोड़ा वो प्रैक्टिस करते रहती हूँ कि क्या पता कल को दिस विल बी द कि if I have to say कि मैं 10 साल में मूवी बनाऊंगी, it sounds very overwhelming, but I know कि it is a possibility कि हो सकता है कि मैं वो स्किल अगर मेरी ओवर ईयर्स एक्चुअली बढ़ जाती है और मेरा विजन इतना विजुअल हो जाता है, तो क्या पता दिस कुड बी समथिंग आई कुड बी वेंचरिंग इनटू. Dialogues, I can see it. Can do it with the right intonation also. हाँ वो तो मुझे मजेदार लगता है. I've read stand-up writing is very tough. Screenplay that way. I'm not saying it's not tough. पूरी मूवी बनाना बहुत मुश्किल है, लेकिन I'm saying कि it is just if you have the right idea, it's just faster than stand-up. Stand-up is chasing a very specific emotion, and unless you get that out of the audience, it's not even a joke. Yeah. So there's no picket fence retiring in Goa वाला plan. अरे नहीं वो समझे बहुत सूडो लगता है. मुझे अपने घर में बहुत मजा आता है. पूरा जब लोग कह रहे थे कि हम यहाँ चले गए, मैंने कहा मेरे को तो अपना सुबह उठ के चाय बनाओ
कि मुंबई में of course the summer is irritating, this humidity, but after that monsoon में भी चाय पीना अच्छा लगता है अपने घर में. आजकल के मौसम में भी अच्छा लगता है चाय पीना अपने घर में. This is a zen level of living. Of course, we can't do nothing about the pollution and other things. वो तो अभी आपको ignore करना पड़ेगा शायद. We have to maybe wear a gas mask very soon. Yeah. And it becomes normal. Like how normal these masks are now. These masks are never going away now. Correct. And we read science fiction, but we are living in one right now. No? As we speak, but you just don't see it. The disparity in everything and just how fucked up the world is. You can't go out with a fucking mask on. Yeah. And sometimes, at least I feel that, do I really want to even participate? I mean, beyond this, because even in this form on stage, you're still part of conflict in many ways. No? You're still trying to impose your will on people, which by its nature is kind of violent. बट फिर वही है कि जैसे मैंने आपको कहा हिमालय में केव भी बची नहीं है, वहां पे कोई ट्रैवल ब्लॉगर पहुंच चुका है. So other formats are open to like script writing, like you said. उसमें अभी उतना मजा नहीं आता कि वो on a given day if you like it's nothing compared to this, but लेकिन वो भी like I can see कि it can होता नहीं कि आप typically अपने स्किल में एक लेवल जब अचीव करते हो, जब आप बहुत अच्छे हो जाते हो तो आपको और मजा आने लग जाता है. लाइक वर्कआउट में भी होता है कि आपका जब मसल डेवलप हो जाता है तो और आपको कूद कूद के चीजें करने का मन करता है. तो आई थिंक अभी लाइक वो स्क्रीन पे राइटिंग में मेरा वो स्किल लेवल अभी बहुत ऐसा बेसिक लेवल पे है. सो मुझे जितना मजा स्टैंड अप में आता है उतना उसमें अभी नहीं आता. बट आई कीप ट्राइंग दीज थिंग्स. दैट्स व्हाई कि जब भी कोई अपॉर्चुनिटी सामने से आती है, अगेन that is one thing about my personality I have realized over years that has been very helpful. कि this concept of yes and जो हम improv में सीखते हैं ना, कि हाँ कि instead of being skeptical and be like ये तो मुझे नहीं करना है, a lot of times I have been like why not, let's just try it. तो like वो ये पूरा improv stand up भी शुरुआत ऐसे ही हुआ था कि करके देखते हैं, कॉमिक्सतान में participate करके देखते हैं क्या जाता है, instead of being like ये तो करने में क्या जाता है, like that becomes more this thing, you know, when opportunity is coming to your on your doorsteps, तो यार इज्जत कर लो उसकी थोड़ी सी. तो वो मैं करती रहती हूँ. Acting, do you enjoy acting? I like it, but मैं बहुत limited actor हूँ that way. That is another thing I can see probably if I develop a skill for it. कि I know कि बहुत caricaturish character होते हैं वो मैं कर लेती हूँ, but like playing a very normal person is I don't have the skill for that. It is a skill. I mean, you have to pick it up. कि यूँ आंटी टाइप करना हो या बहुत ही ऐसा bitchy face को करना हो, तो of course because it's a very cartoonish character, I can probably pull that off. But if I have to be like a young girl who's going to office every day and doing things, I like it. Like I don't know, like I don't have the skill for it to like emote the right amount of balance of emotions. तो पर I think वो भी मैं थोड़ा करते रहती हूँ to be like कि क्या पता at some point I feel so good. तो आपने अच्छा ही किया जो भी आपने क्या. हाँ, उसमें तो अब वो बन larger than life. Yeah. Do people know that you used to do improv earlier? मैंने तो कई जगह बोला तो है, जब भी वो इंटरव्यूज वगैरह होते तो हर जगह बोला तो है कि पहले इम्प्रोव करती थी. Like I don't ask me how did you start this? The usual interview questions. The interview में मुझे पहले मैं इम्प्रोव करती थी. तो मैंने ओपन माइक करने शुरू किए. What is your advice to youngsters? ये सब आता है ना question, the usual questions that you get. Yeah. कि मैं तो क्या कहूँगा यही कि ट्राई करते रहो चीजें. We get a lot of calls. I'm sure you get quite a few also. No, this आके talk दे दो, motivate कर दो students को वगैरह. Then do you feel up for that? Like, do you think we can advise at all? Never. Like I think कि अगर 5 साल पहले आता तो I would have been like यार मुझे सब पता है बताऊंगी, पर लगता है मैं कौन होती हूँ यार. Yeah. तो मुझे ये लगता I think मुझे angst resolution में कभी मदद करने का मन करता है कि I genuinely feel like if there is a forum where I could go and talk about the kind of stress we take during exams. I would not tell them stress ना लो, but for example the things you know better right now, right? कि हम इतने कि अब इतने बड़े हो गए हैं, पता है कि अगर अच्छा शो करना है तो उसके लिए शो के लास्ट मिनट तक रटते रहना इज नॉट द आंसर. या अगर आप रात में ठीक से सोए नहीं हो, आपका दिन ठीक से नहीं गया है तो आपका शो फक हो सकता है. when people are बोर्ड्स की जो एग्जाम दे रहे होते हैं बच्चे या जब एंट्रेंस दे रहे होते हैं तो
you ignore all of that. You're like जितना पढ़ लेंगे जितनी nth minute तक हम fight मारते रहेंगे तब अच्छा होगा. And so many and so many kids don't realize they're fucking up the exam exactly because of all those reasons. सबने किया. तो मेरा मन करता है कि वो सब जाके मैं लोगों को बता पाऊँ. खड़ा रह के वो important questions. Yeah, कि हम like shit हम कितना miserable अपने आप को कर देते हैं यार. और फिर हम realize भी नहीं करते कि इतनी पढ़ाई के बाद इतनी basic गलतियों की वजह से हमारा एग्जाम अच्छा नहीं जा रहा. या फिर वो कि in general the amount of depression or sadness a lot of people associate with these things, exam होना ना होना, which again you can't say is just a silly exam. It's not a silly exam. Okay, it could make or break your life, but at the same time really it does. बट हाँ तो वो सब जब भी कभी मेरे को लोग सवाल वाले पूछते हैं डीएम करके या Q&A में, तो मैं थोड़ा like that is where my ज्ञान part comes out. I'm like, this is tangible, factual information I can give them. It's not an opinion. It's something I genuinely want to help them with. So which is practically adaptable. Those things you wouldn't mind sharing. I don't want to go to an institution and be like, you know what, follow your passion. Maybe not. Maybe you're not good at it. Okay, maybe passion and skill are two different things, and right now they're not aligned for you. So who am I to tell you कि ये करो या ये ना करो? Okay? I don't know you. Okay, See, this is not meant for Twitter. Like what she communicated right now was so much through intonation and not through the words. I wanted to ask you one more thing. Ads, you do quite a few ads. Like, is there any filter in your mind about what you will do and what you will not do? हाँ मतलब एक बेस लेवल पे मैं करती हूँ कि वो ना कि बेसिकली कोई आइडियली द प्रिंसिपल कि जो भी चीज़ आप खुद नहीं करोगे, कि अगर मैं कोई सॉफ्ट ड्रिंक है अगर खुद पीती हूँ, आइडियली उसमें ऑफ कोर्स लाइक यू नो कि चाहे सॉफ्ट ड्रिंक हो चाहे स्नैक्स हो कुरकुरे हो, कहने वाले बोल सकते हैं कि आप तो जहर बेच रहे हैं, ठीक है, पर आई थिंक मेरा ये है कि जो चीज़ मैं खुद नहीं करूँगी या अपने घर में मुझसे छोटे हैं उनको नहीं करने दूंगी, वो मैं फिर इंडोर्स नहीं करती. ऐसे बहुत कम चीज़ें हैं बट हैं, मतलब क्या मैं पीती हूँ यार कोक थम्स अप, तो मुझे कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं फील होती अगर कम से कल को उसकी बात करनी हो, कि इट इज उसके जो नुकसान है वो अवेलेबल है हर जगह, मतलब यू कैन रीड अबाउट देम, यू आर अवेयर ऑफ देम, पर अब है मुझे पसंद है तो आई कैन टॉक अबाउट. दैट्स अ वेरी बेसिक एग्जांपल कि सिमिलरली व्हेन इट कम्स टू एजुकेशन फाइनेंस एंड ऑल, इफ आई नो कि आई कैन प्रॉब्ली ट्रस्ट दिस this system, then I don't have conflict. But if I know कि कुछ shady लोग हैं तो या मुझे खुद ही लगता है कि यार ये this kind of investment I want to endorse, I will not do it. Okay. So do dating apps work then in that case? अब मैंने मना करना शुरू कर दिया. Like I think there was this phase when I was very neutral to it, but now I actually like told a few dating apps का query कि this doesn't align with it's not, it probably is a phase because everything I say is like सब कुछ चेंज होता रहता है, but आजकल I like genuinely I'm not aligned with कि I'm not shitting on dating apps per se, but I don't like as the way I approach romance, this is something I can't, like I've not been able to align with the whole dating app philosophy, or even when people come to me for advice, I would not tell them कि dating app है बहुत मजेदार हो सब. Somehow the way my brain functions, it doesn't work for me. तो मुझे वो अब मैं बोलना शुरू कर दिया कि यार मेरे को मतलब this will look, it should look dishonest because in general if someone is watching my hour and then they watch me doing a dating app का ad, they will be like कि क्या hypocrisy चल रही है यहाँ पे. So and again now I'm not shitting on dating apps ever, but it is when you like the philosophy towards romance is so different from what the core philosophy is there on dating apps कि वो alignment issue हो जाता है. तो अब लेकिन again it's a more recent thing because पहले तो I was like क्या ही बुराई है dating apps में, मैं भी try करते ही रहती हूँ, but अभी I think for some time I won't be like doing anything. So it's a phase again and you're open. Everything is a phase only. इतनी जिंदगी देख के like आप कल को कुछ भी बन सकते हो. You don't know what will change your opinion towards what. Yeah. I had asked you last time also, what are you reading currently? What am I reading currently? मैं सोच रही हूँ
एक तो एक किताब वो सैम हैरिस की बुक है वेकिंग अप करके which is about again finding dissolving yourself Consciousness. consciousness and all. तो वो मैंने अभी पढ़नी शुरू की है. बहुत कम पढ़ाई की. जब हमने लास्ट टाइम बात की थी तो उस समय एक्चुअली आई वाज गोइंग थ्रू अ वेरी रीडिंग फेज क्योंकि मैं But we're all at home also. या तो अब क्योंकि वो शोज वगैरह चल रहे हैं तो फोन पे एक बुक चलती रहती है जो कभी ट्रैवल करते हुए पढ़ लिया है कुछ कर लिया. तो एक वो बुक है. एक उससे पहले क्या पढ़ी थी मैं, मतलब हिंदी की एक किताब है वो कितने पाकिस्तान के, जो मैं बहुत टाइम से खत्म नहीं कर पाई हूँ. धीरे धीरे चबा चबा के पढ़ते रहते हूँ. लाइक रास्ते आई रियलाइज्ड लॉट ऑफ पार्टीशन लिटरेचर. ओके पर वो सब किताबें पढ़ के वो टाइम हो गया. वही एक दो किताबें जो बची हैं वही पढ़े चले जा रही हूँ अभी. और उसके अलावा कभी कभी मैं चिक फ्लिक टाइप भी किताबें पढ़ लेती हूँ. Chick flick. जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट. बट हाँ आई एम थिंकिंग इसके पहले मैं एक किताब तो यही है कि बेसिकली बीच में एक सेल्फ हेल्प का फेज आया था वो भी चला गया. आफ्टर लॉन्ग टाइम रीडिंग समथिंग व्हिच इज मोर टू डू विद हाउ टू फिक्स योर लाइफ व्हिच इज वेकिंग अप बुक. बट अदरवाइज आई वाज मोस्टली रीडिंग फिक्शन ओनली. मैंने वो पढ़ी हुई फ्रीडम एट मिडनाइट रखी हुई है. वो मेरे को अगेन इतनी मोटी किताब है कि चल ही रही है वो. Because I think even reading is going down even for myself because you keep traveling and then it needs एक मोमेंटम चाहिए होता है ना. और तो वो बन नहीं apps पा पे रहा. उसमें तो हो ही नहीं रहा. And अपना तो भी क्या पेशा ही यही है कि सब Instagram वगैरह पे तो you can't even get out of it. But maybe after we retire to Himachal or somewhere. Cool. Yeah. Anything else? I think I covered most of what I wanted to ask. Anything you want to share हमारे दर्शकों के साथ? क्यों नहीं ऐसे. There are days. Like basically life can become very painful. Okay, so जब तक painful नहीं है तब तक पेन में रहने की जरूरत नहीं है. Things will happen that will be bad. So till the time they are not happening, please try to be happy. Wow, that's oddly motivating. मुझे तो बहुत लगा है जब कोई क्लिप करता है कहते हैं कुछ ये जो अच्छी चीज उसके लिए क्लिप क्यों कर रहे हो यार, अभी जब बुरा होगा उसका वेट कर लो. Yeah, you're underestimating life. It'll take care of the bad parts. Yeah, and otherwise I'm doing shows in many cities. So She's still on our YouTube channel, but oh shit, yeah, probably soon, January, February tak. Okay, no promises, but maybe soon. And she's touring most cities. Yeah, मतलब it will most metros and capital cities तो होगा ही. उसके beyond कहाँ जाना है, I'll figure ticket कहाँ बिक रहे हैं. In case you don't follow her already on Instagram, we will share the ID also, and that's where all the show updates happen. Yeah. And then that's where all the other updates also come. She's doing a lot of things with Netflix, with चल रहा है. maybe script writing soon, and maybe acting also. Eventually, you never know. Okay, thank you. Thank you. A pleasure.